Hello everyone, myself Sahil Singh. Currently, I am in a final year of my BTech degree from BIT Jhansi, and also I am SD intern at Newgen Software Limited. Okay, so actually we are batchmates. So this session is not going to be like other interviews. It will be an interactive session, like placement per charcha. Okay, so here we have Raveet Kumar, a Noogler. So Raveet, first tell everyone about yourself. Okay, so my name is Raveet Kumar. I am currently pursuing Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering from BIT Jhansi. I've got four offers till now. Like the first one being from DevTown. That was a part of an internship. For the position, I was a content writer for them for 2-3 months. After that, I got promoted and I started as a DSA and CP instructor. And then the second one offer that I got was from Infosys for the power programmer role, and I got that from Hack with Infi 2021. Then after that, the third offer that I received was an on-campus opportunity, and that was in Josh Technology Group. Yes, and the final being for what I am here for, that is Google. Yes. Okay, after a lot of requests and questions from different college students for the information of interview process and key elements of his preparation. Here we are with all the answers of your questions I have selected. He is going to enlighten us about the interview process of Google and his experience during the process, starting from the shortlisting process to the offer call. Okay. So my journey started from obviously learning DSA and all that, but basically I'm going to first explain about the process in Google for the recruitment. Yes, so in September I submitted the form for this position SWE in Google through their career site. After that, I got contacted by them in I think 27 October. Then on 14th October, 14 November, my first round was scheduled, and after that, approximately 2 weeks later, my second and third round were scheduled on the same date. Yes, and finally, after 1 week, my final round, fourth round was scheduled, and yes, after 1 month, I got the result. And for the round, I'm going to tell that all the four rounds were technical round, but in the third and the fourth round, there were 15 minutes extra for the googliness round. The googliness round, you can understand it like more of a HR type round, and in that they assess mainly leadership skills and qualities, like if you can work in team also, and these type of qualities. Yes, and yes, one more thing, all the rounds were 45-minute rounds in Google, and they are very strict related to that. Okay. Ravi, tell me what requires to get into such a dream company being a tier 3 college student? Yes, so the one thing I can tell is like the most important subject that I feel is for currently for the placement is DSA, obviously for any product based company that I can tell. Like even in service based companies also now DSA is asked a lot. So obviously you can't ignore that subject if you want to get placed. Yes. And guys, for your kind information, he is not a geek, which you suppose as he is now in Google. He is captain of volleyball team of our college. Okay, and also a personality who takes part in different activities of our college. So Ravi, my next question is how to develop confidence for such rounds you have explained during the interview. How to develop confidence? What I can say is for obviously first thing is practice. Obviously when I have solved enough number of questions, after that I get comfortable with the questions like DSA question. Obviously if I see a new question, I don't get nervous after seeing that. But this is one thing only, that is more of a technical thing. But other than that, interacting with the interviewer, when a random person comes to you and you have to talk with confidence, obviously he's an interviewer. So that confidence, I can say, I also got from my internship in DevTown. Like I used to handle a lot of student. I think approximately 300 students were in a batch. So I used to interact with a lot of student. So yes, that thing also helped me in gaining the confidence. But basically, obviously, everyone can't become a teacher for that to get confidence. So one thing I can tell is
try to solve as much question as possible. Try to give interviews with your friend. Yes, one more thing, like peer programming is also getting famous now, you can say. So obviously try to get like ask question to your friend, then he will explain, and then he can ask you question, something like that you can do to gain confidence. And yes. Yes, teaching these number of students helps a lot in interview to explain any Yes, problem. a lot. Okay, David, my next question is there any particular language which is important for interview preparation? Like there are many languages available, Python, Java, C++. Hmm. No, I think like what matters the most is whatever language you are choosing, that should be object-oriented programming language. And the second thing is like many of the companies, most of the time, uh, many, I think like if there are 100 companies, only 5 to 10 companies will not allow a Python, like for a Python programmer. So you can choose basically if you will like follow my thing. Obviously, I would have chosen C++ or Java if anyone give me choice. Yes, if you are comfortable with Python, you can go for it. But just like if I was at that time, I would surely choose either C++ or Java. Okay, here I have a famous question from a lot of students. How to actually focus on one thing at a time? Because there are multiple things for an engineer, like preparing for the aptitude, doing core subjects, developing side projects, and also obviously data structures and algorithm. So, is there any order that a student can follow? Yes, what I can say is obviously I have said previously also, like you should give more focus on DSA. First preference should be DSA, then a little bit project. Okay, if your project is not that strong, more focus on DSA, and plus some core subjects. And core subject, when I'm saying like OOPS, computer networks, database management system, and operating system. These four subjects. Yes. So the thing is like obviously if you want to get internship in startups, basically startup more focus on development side most of the time. So you can say like your project should be good. You can choose either full stack, web development, Android development, or even machine learning. Yes. You can make projects for them. If your DSA is not that good, if your DSA is very good, you can go for competitive programming also to improve yourself. Yes, so that is also one way for getting into Google. Like obviously there are coding contests like Kickstart and Hash Code, not Hash Code, like Code Jam, and they hire through those contests also. Yes. Okay, my next question is how much importance do projects and internship matter in these types of interview, especially in the Google? What? How much importance do projects and internship matter in these interviews? So projects and internship. What I can say is obviously projects matters a lot in internship when you are going for a startup. It will not matter that much if you are going for directly a big product based company like FANG level company. So it will not that matter. But yes, for a startup it will matter a lot. You should make some projects, not very strong, but at least a project like obviously that have taken 1 month for the completion. Yes, so that's all. At least you should give a little focus on project also. Not that much focus. Like if you are giving 6 months for DSA, so you can give like 1 month for project also. At least this much. Okay, my next question is which type of questions you were asked in your interview? Let's start from the first interview. Like in the first interview, the question was related to designing a data structure, something like that, and in which two operations were given, and I have to solve it as optimized manner as possible. So mainly you can use a policy-based data structure like ordered set, but I used a normal set with some additional constraint. Yes. And for the second one? For the second round, it was a question like that I solved it using binary search on strings. Obviously, I used binary search on string, and the follow-up question, they said that like the array of strings that was given to me, it is not going to be in sorted order. So obviously, I can't use a binary search for that. Then I used a trie data structure for solving that. Okay, now for the third round? In the third round, it was more of a rapid fire type of round, like in which a 4 to 5 DS question of approximately difficulty level like lead code medium was asked to me. Yes, and I have to solve it as quick as possible in the optimized way.
Okay, and for the final round? And for the final round, only a single question was asked to me, and that I solved it using Kahan's algorithm, that is used for solving topological sort. Okay, Ravi, tell me, what is this googliness round? Is it the separate round or it was merged in the technical interviews? Though actually, googliness round was merged with my third and the fourth round. So like mostly it is a 45-minute interview for Google, but my third and fourth round were 1 hour each. So 15 minute and 15-minute each for googliness. That Oh, was I did. so it is like a more of HR round. HR round, yes. Okay. Normal leadership question was asked. Okay, Ravi. My next question is that there are so many students जो कि तुम्हारी जर्नी जानना चाहते हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक तुमने कैसे कैसे तुम्हारी क्या जर्नी रही कॉलेज में है ना तुमने कैसे पढ़ाई की कितने मजे किए कॉलेज में हाँ वो सारा कुछ तो लाइक जर्नी तो काफी अच्छी रही है फर्स्ट ईयर में मैंने जितने मजे हो सकते थे पॉसिबल किए हैं लाइक स्पोर्ट्स हमने एक्चुअली लाइक स्पोर्ट्स पार्टीज सीनियर्स थोड़ा सा रैगिंग भी हाँ सब मजे तो हुए हैं काफी ज्यादा सीनियर्स के साथ ऑब्वियसली काफी मजा आया बस पढ़ाई नहीं हुई है ये बता दें सेकेंड ईयर में भी सेम इंटर स्टेट इंटर कॉलेज competition happens for sports so like that is known as प्रबंधन in my college so that happens so obviously पूरे पूरे दिन ग्राउंड पे रहते थे हम लोग प्रैक्टिस एंड ऑल यही सब चलता रहता था सिर्फ पढ़ाई के अलावा सारी चीजें हुई हैं पढ़ाई की जैसी बात है कि एग्जाम कैसे पास होते थे लास्ट नाइट पे बस स्टार्ट हो जाते थे हमें भी पता है हमने कैसे पास हुए हैं हाँ टेंशन में बस सो के जैसा हमें पता है कैसे पास हुए हैं और उसके बाद तो फिर लॉकडाउन आ गया हाँ लॉकडाउन तो फिर हाँ तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों का कि लॉकडाउन में तुमने कैसे टाइम यूटिलाइज किया कैसे प्रिपरेशन की क्योंकि मेनली जैसे तुम बता रहे हो सेकेंड ईयर तक हमने कुछ नहीं तो फिर नहीं किया था कैसे मतलब एक साल में जो लॉकडाउन का प्रोसेस था तो उसमें कैसे तुमने अपने आप को मास्टर किया डीएसए में सो लाइक लॉकडाउन में जब घर पे आ गए थे सब लोग तो 2-3 महीने तक तो अच्छा चलता रहा ये 2-3 महीने क्या जुलाई अगस्त हो चुका था थर्ड ईयर में मतलब स्टार्ट हो चुका था हमारा और अब कुछ तो पढ़ नहीं रहे थे तो मम्मी को लगा पेरेंट्स को लगा कि अच्छा ये यहाँ पे नहीं जब पढ़ता हमारे सामने तो वहाँ क्या पढ़ रहा होगा तो थोड़ा सा मजबूरी में स्टार्ट किया और मजबूरी में स्टार्ट करते करते थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आने लगा डीएसए में थोड़ा सा सुना कुछ सीनियर्स से पूछा कुछ अच्छे अच्छे जो लोग हैं जो मतलब मैं मानता हूँ कि हाँ काफी अच्छी जगह है उनसे गाइडेंस ली थोड़ा सा कि क्या करना चाहिए तो सबने डीएसए के लिए बताया कि हाँ अच्छी कंपनी में जाना है तो थोड़ा डीएसए प्रिपेयर कर लो एटलीस्ट कुछ नहीं आता तो डीएसए में इंटरेस्ट भी जागने लगा धीरे धीरे लर्न करते करते फरवरी हो चुका था 2021 में एंड आई गॉट एन इंटर्नशिप फ्रॉम शेपिया फॉर द कंटेंट राइटर डीएसए तो यस फिर वहाँ पे काफी अच्छे स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ जब परफॉर्मेंस देखा तो डीएसए एनसीपी इंस्ट्रक्टर बन गया काफी स्टूडेंट्स को हैंडल करा यस ऐसे ऐसे करके मेरी डीएसए जर्नी इंप्रूव होती रही एंड पढ़ाई ऑब्वियसली डीएसए सबसे ज्यादा किया है और बेसिक प्रोजेक्ट्स मैंने बना लिए थे अगस्त नवंबर 2022 में अगस्त टू नवंबर के बीच में थोड़ा बहुत So Ravi, many students have question in learning that how to learn fast and keep remembering the part which we have learned for a long time. The simple answer is practice. Like ऐसा नहीं कि किसी की मेमोरी कुछ की होती है प्रोडिजी होते हैं ऑब्वियसली लाइक अपने केस में नहीं बोलूंगा बट ये है बोल सकता हूँ कि हाँ अगर तुम प्रैक्टिस एक क्वेश्चन मतलब जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं 4-5 उस पर क्वेश्चन कर लोगे ना तो काफी लंबे टाइम तक वो याद रहते हैं लाइक तुमने एक क्वेश्चन किया आज कि हाँ ग्राफ्स में डीएफएस लगा रहे हैं तो क्या पता तुम्हें डीएफएस इंप्लीमेंट करना ना आता हो तुमने उसे इंप्लीमेंट किया खुद से ट्राई किया चाहे देख के किया ऐसे ही तुमने 4-5 बार ऐसे डीएफएस वाले क्वेश्चन किए धीरे धीरे तुम्हें डीएफएस का इवन सिंटेक्स तक याद हो जाएगा तो यही चीजें हैं धीरे धीरे याद हो जाती है मतलब मेन चीज है बस प्रैक्टिस तुमने एक टॉपिक नहीं तुम्हें आ रहा है उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो आ जाएगा तुम्हें याद हो जाएगा Okay, this for the DSA rounds. Okay. Now, one question is that how to get reference or get a chance for interview in a big MNCs. So like the answer is simple like तुम्हें थोड़ा प्रोफाइल अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप आई कैन से इज अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन रखो ठीक है जो भी सीख रहे हो अपडेट कर दो उसमें ठीक है सेकेंड थिंग लिंक्डइन अपनी स्किल्स पे वर्क करते रहो जो लिंक्डइन पे अपडेट करोगे स्किल्स में अब सिंपल सा रीजन है कि तुम्हें किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है या अच्छी कंपनी में तो एटलीस्ट कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाए तो या तो तुम डेवलपमेंट इतना अच्छा कर लो या तो तुम फिर डीएसए अगर तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो
तुम्हारी रेटिंग्स बढ़ेगी, रेटिंग्स मिलेंगी, तो जो अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर है जो पहले से हैं कंपनी में उनसे रेफरल मांगो। अगर उसे लगेगा कि हाँ तुम अच्छे हो, तुम्हारा रेफरल यूज हो, वो उसका रेफरल बेस नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली वो तुम्हें रेफरल देगा। एंड इवन एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें खुद भी फायदा होता है कि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट उनके रेफरल से सिलेक्ट हो तो वो तो देने के लिए है ही, वो तुम्हें रेफरल देंगे। बस द थिंग इज तुम डिजर्विंग बनो कि तुम उनसे रेफरल ले पाओ। Okay, Raveet. My next question is, what are the resources you referred for the preparation? व्हाट आर द रिसोर्सेज? Yes. लाइक मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत ही ज्यादा लाइक कोई मैंने कोर्स नहीं लिया है। फर्स्ट थिंग ये है, कोर्स मैंने नहीं कोई भी लिया है। हाँ, बट ये नहीं बोल रहा कि तुम नहीं कोर्स ले सकते हो, ऑब्वियसली जो जहाँ भी तुम्हें सही लगे ले सकते हो, अपनी प्रेफरेंस होती है। मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया था, लाइक मैंने वेबसाइट से किया है, cpalgorithms.com से किया है, गीक फॉर गीक से पढ़ा है थोड़ा बहुत, एंड देन क्वेश्चंस काफी सॉल्व किए हैं। क्वेश्चंस काफी सॉल्व का मतलब मैं डायरेक्टली सबमिट भी नहीं करता था, ये गलत बात थी। क्वेश्चन कोई भी अगर तुम पढ़ रहे हो उसे सबमिट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जब तक ग्रीन टिक ना दिख जाए तब तक कोशिश करो सबमिट करो, चाहे देख के एक बार कर लो सबमिट, पर कर दो उसे सबमिट। ओके, तो ये चीजों का ध्यान रखना होता है। हाँ, Okay. So my next question is, what are the challenges you faced during the preparation, like working for late hours, for long hours, like this? अच्छा, मैंने प्रिपरेशन में हाँ थोड़ा सा हार्ड रहा था, लाइक Like तुम पढ़ते नहीं थे पहले हाँ बिल्कुल भी, पढ़ता उसके नहीं था बाद तो उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्टी थी, बट एक बार इंटरेस्ट जाग जाता है। लाइक मुझे डीएसए काफी अच्छा लगने लगा, बिकॉज इट वाज मोर ऑफ लाइक मैथ्स हमेशा से मेरी स्ट्रांग थी, तो मुझे मजा आने लगा था कि हाँ अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे तो कुछ अच्छा लगने लगा, मतलब दिमाग यूज हो रहा है तो किसी चीज में अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीजें। हाँ, पजल्स ऐसा लगता था, काफी अच्छा लगता था, तो इसलिए टाइम मुझे पता नहीं चलता था, लाइक 6 to 8 आवर्स कब लग जाते थे मुझे पता नहीं चलता था वो, और मजा आ रहा था। तो 6 to 8 months मैंने ऐसी 6 to 8 आवर्स पढ़ा है। Okay, David. So this is the question from many distracted students. Okay. So how you overcome the distraction during your preparation? डिस्ट्रैक्शन कैसे ओवरकम? Like you are engineering student and there are many possible distraction for you. So how you overcome them? डिस्ट्रैक्शंस ओवरकम करने की जरूरत है। अब सिंपल सी यही बात है कि इंटरेस्ट अगर तुम्हारा किसी चीज में जाता है, तुम्हें लगता है कि हाँ नीड भी है, ऑब्वियसली नीड तो थी, लाइक बहुत से रीजंस होते हैं, सबको कोई ना कोई नीड होती है कि हाँ जॉब क्यों चाहिए, अच्छी जॉब क्यों चाहिए। तो नीड और इंटरेस्ट जब साथ में मिल जाते हैं ना तो डिस्ट्रैक्शन थोड़े थोड़े हटने लगते हैं खुद ही। यस, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता कि हाँ मैंने ऐसे हटा दिया। सिंपल ये था कि मुझे गोल अपना दिख रहा था जो मुझे करना था। लाइक एक होता है ना कि अपने वर्ड्स के पक्के बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैंने बोला था एक बार कि हाँ लाइक अभी मैं थर्ड ईयर में था, लाइक जनवरी हो गया था 2021 में। मैंने बोलता लाइक मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट होने से पहले मेरे पास एक डबल डिजिट पैकेज होगा, जो कि मैंने अचीव किया, शायद तू जानता है। फिर उसके बाद इंटर्नशिप का बोला था, वो भी मैंने अचीव किया था। फिर मैंने बोला था कि ये ईयर एंड होने से पहले मेरे पास एक फैंग कंपनी में से ऑफर होगा, और वो भी मैंने अचीव किया। 2022 हो गया जनवरी में, बट ऑफर मिल चुका था। Yes. तो ये चीजें भी मोटिवेट करती हैं, तो डिस्ट्रैक्शन खुद ही हट जाते हैं जब पता है कि हाँ बोला है मैंने वो चीज, वो अचीव तो करनी है। Okay, David. This was all about your success. So there were many failures also. Do you have any failures to describe to students? Like तुमने कुछ failures face फेलियर्स किए? बहुत से ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में, लाइक इवन जब पूरे पूरे क्वेश्चन हो जाते थे वापस कॉल नहीं आता था। इवन बोलना नहीं चाहूंगा, कंपनी थी उसका पूरा इंटरव्यू, आई थिंक 4 टेक्निकल लाइक ऑनलाइन असेसमेंट्स दिए थे, बट उसके बाद इंटरव्यू का कोई कॉल नहीं आया, जबकि सारे क्वेश्चन किए थे। And you also earlier applied for the Google, but there was no answer. No, मतलब like many a times I have applied, but no response I have received. So the simple answer is like you can ask for referral if your skills are really good and keep on applying as much as possible. Apply करने से मत डरो, बेशरम हो जाओ, अप्लाई करते रहो। इंटेल 5 बार अप्लाई किया होगा, कभी नहीं आता रिस्पॉन्स, हर बार वी वांट टू गो विद अदर कैंडिडेट, तो होता रहता है। बट इससे ये मतलब नहीं है ना कि नहीं जा पाओगे किसी अच्छी जगह। Okay, David. At last, तुम किस किस को थैंक्स बोलना चाहोगे? Including me. हाँ, साहिल एंड काफी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं फैमिली में, तो सबको ही थैंक्स बोलना चाहूंगा ऑब्वियसली। So this is the end of this session. Okay. And at last, I want to give you a gift. Like ये लो तुम्हारा gift teddy bear. Okay. ये कहाँ से तुम्हारे मन में आया बे? It was my चलो plan, ठीक है, obviously. इस पर बॉक्सिंग किया जा सकता है अच्छे से। Okay. Thank you. Jokes apart, guys.
We are going to come up with the other interview sessions, okay, for the next time. So obviously keep subscribing the channel. Like we are going to come up with a lot of learning material related to DSA and core subject also. So yes, keep subscribing and liking the video. Okay, bye. Bye everyone.